श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रम्। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रींकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका। एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः। अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीं अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः। ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते। या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रींकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी
तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रींकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च
षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमी च वरारोहा अष्टमी वरदायिनी नवमी खड्गत्रिशूला दशमी देवदेवता एकादशी सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशी ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमी वरदायिनी नवमी खड्गत्रिशूला दशमी देवदेवता एकादशी सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशी ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम्
अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते
शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्। ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते। सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी
ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओंकारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रींकारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता
चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमी विष्णुपत्नी च षष्ठी च वैष्णवी तथा सप्तमी च वरारोहा अष्टमी वरदायिनी नवमी खड्गत्रिशूला दशमी देवदेवता एकादशी सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशी ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थी सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठी च वैष्णवी तथा सप्तमी च वरारोहा अष्टमी वरदायिनी नवमी खड्गत्रिशूला दशमी देवदेवता एकादशी सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशी ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु
मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमम् धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययं विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च कारागृहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे
श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययां विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सद्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओंकारं विष्णुमव्ययं सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्षलक्ष्मी नमोऽस्तुते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितं ओंकार परमानन्दं शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पंचमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूला दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं षड्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःख दरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीम् अपुत्रः पुत्रमुत्तमं धनं यशस्यमायुष्यं वह्नि चौरभयेषु च शाकनीभूतपीताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे संग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने शमशाने च काराग्रेहारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणं स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वश्वेते वृषे च युगले यज्ञे च युपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सात्श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चला।